Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. And this is Friday at 4 that we do. आज हम YouTube पे कर रहे हैं. And before I move on, I would like to ask every one of you, how are you doing today? Is everyone doing fantastic? And are you able to see me? Is it screen right? And you are able to hear me clearly? Put it on the chat here on the right hand side in the chat window. अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं एंड समझ पा रहे तो चैट में लिखिए तो मुझे पता रहेगा आप यू आर एबल टू डू दैट एंड आई एम जस्ट चेकिंग विथ माय टीम इफ द चैट इज enabled for everyone and okay, so it's amazing to see markets are actually not doing anything, right? Last 3 दिन से जब वो 580 का 18,580 का लेवल देखा आप लोगों ने, how many of you are following me on Twitter? I'm asking. जहां पर 18,580 का एक लेवल था जिसके बारे में हमने बात की थी, and did you guys see how amazing that level has worked on 18,580? Okay, I can see all the chat are now coming in. That is amazing to see that. And चलिए बहुत बढ़िया है. तो मतलब आप सब सुन पा रहे, देख पा रहे. तो 580 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था. बॉलिंगर बैंड्स का मिड था. साथ ही में हमने मेंटरशिप लाइव सेशन किया था, वहां पर हमने डिराइव किया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और उस लेवल को अगर मार्केट ब्रीच नहीं करता है तो साइडवेज हो सकता है. और नीचे में जो सपोर्ट है वो अराउंड 470, 18,470, 18,430 का सपोर्ट लेवल्स है और निफ्टी इसी रेंज में घूम रहा है. मतलब यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं है. And I'm going to talk about time cycle. So आज का webinar, I thought I'll talk about time cycle. Very, very good afternoon to all of you. Neeraj, Nityam, Srinivas, Deepak, Sujit, Jay, Prabodh, every one of you. Hemant, everyone. So आज का जो move है, आप देखेंगे तो पूरा रेंज में फंसा हुआ है. मतलब लग रहा है नीचे जा रहा है तो लग रहा है कि शायद नीचे का ब्रेकडाउन होगा, ऊपर जाता है तो लग रहा है यार ब्रेकआउट आ जाएगा, लेकिन मार्केट ने किया कुछ भी नहीं, ये रेंज में ही रह गया. इट हैज नॉट गॉन एनीवेयर, इट हैज नॉट गॉन इन एनी डायरेक्शन. इफ यू वुड हैव चेक्ड, इट हैज नॉट डन एनीथिंग. और ऐसे में अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो पैसा बनाना थोड़ा और मुश्किल है. अभी मंडे को 12 बजे के आसपास एक टाइम है जहां पर मोमेंटम मार्केट में वापस बनने की गुंजाइश है. सो इस टाइम अगर हम देखेंगे तो मार्केट साइडवेज था और साथ ही में संडे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जोन है. कैन समवन टेल मी व्हाट इज देयर ऑन संडे? श्रीनिवास मिश्रा is saying I'm big fan of yours, not buttering truly. Thank you very much. I'm glad. Excellent level by market god. I'm not god. I'm just an ordinary chartist. I just read what the markets are trying to suggest. What I'm asking is Sunday there is an important event. You know lunar cycle. So Sunday को एक lunar cycle है, पूर्णिमा. शायद आपको पता ना हो, मैं आपको बता देता हूं. तो पूर्णिमा है और पूर्णिमा के वक्त ट्रेंड चेंज होता है. तो जो लास्ट 3 दिन से ट्रेंड चल रहा था वो साइडवेज का है. हो सकता है साइडवेज टू नेगेटिव का ट्रेंड है, हो सकता है लूनार साइकिल से वो शायद चेंज हो जाए, लेकिन प्राइस एक्शन जरूरी है. मंडे को 12 बजे एक और टाइम है जहां पर मार्केट का मूव वापस से ऊपर की ओर चेंज हो सकता है. सो अगेन देयर इज अ टाइम ऑन मंडे विच इज अराउंड 12. So now that we know that the overall time is changing. So I'm not talking about time is changing from negative to positive or positive to negative. I'm saying that the time is changing, which means something will happen on Monday for sure, which means a trend has to emerge on Monday. That is what I know. If I know with respect to Neo wave that direction शायद positive है, ये B wave है, C ऊपर आएगा या ये फोर्थ वेव है, फिफ्थ ऊपर आएगा, then I can anticipate a move and bet on that. So there are two ways to trade here. One is you are anticipating a breakout and betting, and second is you wait for the confirmation and then you are betting. So is there anything right or wrong about it? No. So some people are more comfortable with good risk reward where the risk is less and the reward is more. Then you can bet in anticipation. Some people are more comfortable on confirmation. So अगर confirmation आपको चाहिए तो confirmation के लिए you might want to wait for opening of Monday and how it happens. और अगर आप options trade करना जानते हैं तो आप strategy form कर सकते हो. मतलब market sideways है,
कुछ नहीं कर रहा है तो मे बी स्ट्रेंगल करके रख दिया, या रेशियो स्प्रेड बना के रख दिया. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू. Now, I'm not going to talk about all of these things with respect to simply giving you Gann. I want to show you something about time. So this focus that today we are having is purely on time cycles and time concept. So hota kya hai time? Let me explain it to you in a much easy fashion. Just one second. I'm just going to open up a chart also. Market, stocks, prices, everything is governed by time. Now, very few people understand time. होता है कि भाई जब भी हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो हम पहले देखते हैं यार पंचांग में या कैलेंडर में या जहां पे भी आप रिफर करते हो भाई कौन सा सही समय है करने का. ना वो क्यों देखा जाता है? This is not something orthodox way. This is how the entire universe functions. Even in stock market, there are certain times which is right for market to go up. There was a question asked by someone, यार market जब गिरता है उसका time नहीं होता क्या? No, because Nifty, stocks, anything that you are looking at, time is essentially used to catch lows and not tops. There is a science to it. There is a complete science to it, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में मास्टर ऑफ साइकिल से बात करूंगा. लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्राइमर फोकस ऑफ टाइम साइकिल्स और कैचिंग दैट टाइम इज टू कैच द लोज. इफ वी सी अ बाउंस बैक फ्रॉम द लो, बट just a minor bounce back and then the low gets taken out, we say that the time has turned from buy side to the sell side, which happened yesterday. We got a bounce back and then Nifty broke below 18,480 level, which turned the time on the sell side. So in that kind of a scenario, you can sell or short call options, which worked out very well in today's session. And time is again turning back on the upside on Monday, say around 12. So because I know that the time is turning up on Monday around 12, I can then start preparing my strategy. यार अगर अच्छा swing high निकल गया, price action मिल गया, remember one thing, भाव भगवान छे, आपको समझना है, and समय बलवान छे. So you need to trade with price and time both. Now let me share across a chart and give you a classic example of this time cycle. Okay, this is a 55 days time cycle. ऊपर के जो blue lines है वो Gann lines है. एंड यहां पर ये अगर आप देखोगे तो ये ब्लू लाइंस को फिलहाल इग्नोर करो. ओके, एंड यहां पर बहुत ही क्लियरली आपको समझना है कि ये जो लाइंस बनाई हुई है रेड वाली, ये रेड वाली लाइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इग्नोर करो द अदर नॉइज दैट यू आर सीइंग ऑन द चार्ट. सिंपली फोकस ऑन द रेड टाइम साइकिल. दिस इज अ रेड टाइम साइकिल. गाइस, आर यू देयर विथ मी? And this red time cycle is suggesting that we bottomed out here, bounced back, bottomed out here, bounced back, bottomed out here, bounced back, bottom exactly यहाँ पर bounced back, यहाँ bottom बना, bounce back. This is a phenomenal cycle which we are looking at it, and it has worked amazing. यहाँ पर bottom बना, bounced back, यहाँ पर bottom बना. आप देख पा रहे हो दोस्तों, समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? Look at the low being formed here on 19th of April when Nifty was at the level of 19th April को निफ्टी का जो लो बना था वो 17,580 के आसपास था. वहां से 1000 पॉइंट ऊपर है. निफ्टी इज अप बाय 1000 पॉइंट्स फ्रॉम दैट लो जो मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं. Isn't that astonishing? Which means that every time there is a red cycle, there is a tendency of prices to form a low. Do you agree with me on that? मतलब just don't believe me. You look at it, you will be astonished to see every time यहां पर नहीं चला, यहां पर थोड़ा लेट हुआ, but again it started working out extremely well. Can you see that? Can you see that? This is the time support zone we say. मतलब ये zone है जहां पर price action buying का अगर मिल गया, you have a classic conviction to take a trade. Because now you have time along with price to confirm that. So this is how we trade time, and we call people who are trading time as #time traders. Time traders, which are looking at the time. If the time is right, they are buying.
Is it 100%? No. There will be losses, there will be stops, but this gives you the much needed conviction or kick, you can say, because now you know, even if I'm unsure, but the time is right. Wow, it will work. You can apply these cycles of time even on a 15-minute chart. ठीक है, ये तो मैंने आपको डेली पे बताया. You can apply this concept of time even on a 15-minute chart. बहुत क्विकली मैं आपको अभी बताता हूं, इसके बारे में हम डिटेल में कल बात करेंगे. एक फ्री वेबिनार रखा है मैंने 11 बजे. वो वेबिनार का लिंक आपके साथ अभी शेयर हो जाएगा. यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ वेयर वी विल डिस्कस फॉर 2 hours about this concept of time. For now, I'll simply tell you how this cycle is working. If you look at this, there is a classic up move, minor bounce, no swing high taken out, super up move, यहां से up move, यहां से up move, यहां से minor pullback आया, but still this cycle is still running. So I can say the low of today is a time support low. ये लेवल जो है आज का जो लो बना है निफ्टी का, आपको मैं एग्जैक्ट लेवल बता देता हूं. यहां पर एग्जैक्ट जो निफ्टी का लो है आज के दिन में, वो है 18,478, which means that's the time support low. So 18,478 इंटैक्ट जब तक है, और अगर ये स्विंग निकल गया 570, 580 का, मार्केट विल टर्न ब्लास्ट अगेन ऑन द अपसाइड. So this way, if you know the concept of time, you can say it's good. If the low of the time is taken out, which means अगर ये जो टाइम सपोर्ट जोन है ये अगर ब्रेक हो जाता है, तब जाके हम कहेंगे कि यार निफ्टी फिलहाल सेल में है. कब तक? जब तक ये साइकिल किक इन नहीं होता है. कुछ समझ में आया आप लोगों को? The sell will happen if the time support zone is taken out. So as I said, everything is governed by time, and the time is right, then you can do things very easily. If the time is not right, then struggle होता है ना. लाइफ में भी ऐसा ही है कि अगर समय साथ में ना हो तो भले ही आप कुछ भी करो नहीं चलता है, बट अगर समय सही है तो कुछ ना करो तो भी चल जाता है. वही चीज यहाँ पर भी है. So are you understanding what I am trying to tell you? So what I am seeing there is one more time cycle which I follow, जिसका समय पॉजिटिव हो रहा है मंडे को 12 बजे के आसपास. 12 के आसपास मतलब हो सकता है 11 बजे हो जाए, हो सकता है 1 बजे हो जाए, बट वो टाइम जोन पे एक और है. इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं जिसे कहते हैं हम टाइम साइकिल के वर्ल्ड में. इज इट ओके? वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑन टाइम. आर यू एवरीवन फाइन विद दैट? I need the josh, yaar. I don't see people. I want you to chat. I need to understand your understanding. और अगर आप chat नहीं कर पा रहे तो you need to subscribe to the channel so that you can chat with me. So this is very very important for me to understand. Are you there? Every one of you. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ check कर रहा हूँ. Just a second. Okay. So if you are looking at this concept, I want to explain you one more concept of FLD. FLD कहते हैं future line of demarcation. Now that is something which is on the basis of time. इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, खाली मैं आपको एक ये इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूं जो बहुत ही शानदार इंडिकेटर है, बहुत अच्छे से वर्क करता है. Are you able to see this black line here? So the black line that you are seeing on the chart here is something which is known as a FLD. FLD मतलब होता है फ्यूचर लाइन ऑफ डिमार्केशन. ओके, सो फ्यूचर लाइन ऑफ डिमार्केशन हमें ये बताता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहां पर है. सो व्हाट इज, सो इंटरसेक्शन के बेसिस पे हम टारगेट, सो टाइम के बेसिस पे आप प्राइस का टारगेट भी डिराइव कर सकते हो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट basis of the price, basis of the time, you can also derive the target for price. And now this concept is very less known to people and it is fantastic. So I'll just ensure you to see this chart very very clearly. ठीक है, ये जो चार्ट आप देख रहे हो यहां पर खाली आप ये ऑब्जर्व करो, जहां पर भी इंटरसेक्शन हुआ है, इंटरसेक्शन एरिया, you got the equal amount of move on the opposite side. So it has worked like amazing. So time can be used to derive
price target and not only time turning areas. Is it clear? Everyone. तो यहां पर इसे कैसे देखना है मैं आपको बताता हूं. ये चार्ट में जहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ FLD. इसका क्या मतलब है, क्या है, ये सब चीजें मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा. आई एम जस्ट टेलिंग यू how this indicator works and how it can help you to trade very efficiently, very efficiently. So यहां पर अगर आप देखोगे, this intersection happened here and we got the prices moved up to that extent. मतलब जितना नीचे से मूव था, the amount of move that came from the downside is projected on the upside. Intersection happened here, prices came down that much. Intersection happened here, prices went up that much. Intersection here, prices came down that much. It's amazing. It's amazing. Same thing यहाँ पर अगर आप देखोगे, you have been seeing me being bullish all the way from 17,060 because यहाँ पर intersection हुआ and look at the prices achieved the target at this point of time. So I've been bullish all the way, riding it on the upside because of this concept of price target basis of time. This is an amazing concept कि आप price का target भी derive कर सकते हो basis of time, and it has worked 90%, 95% of the time I would say. एक आध इंडिकेटर है जब नहीं चलाओ, बट बड़ा टारगेट अगर आपको कैप्चर करना है, बड़ा स्विंग आपको कैप्चर करना है, दिस वर्क्स लाइक मैजिक. आर यू विथ मी? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आज तक तो यार पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता भी है. नाउ एटलीस्ट आपको पता है ऐसा कुछ होता है. सिंपली हॉनेस्टली रिप्लाई करो, कमेंट करो, क्या आपने ऐसी कोई चीज किसी ने बात की थी आपके साथ में कि यार आप मार्केट को टाइम कर सकते हो? आज तक आपने क्या सुना था? मार्केट को टाइम करना ही नहीं चाहिए, टाइम डजंट वर्क, यू शुड ऑलवेज डू एन SIP, यही सुना था ना. मैं तो आपको कह रहा हूं मार्केट को टाइम किया जा सकता है, एंड इट इज समथिंग फिनोमिनल. एंड आर यू एबल टू सी दैट हैपनिंग, दैट वी आर एबल टू टाइम द मार्केट? सो नेक्स्ट टाइम क्या है मार्केट का सही टाइम, वो मैं आपको बताता हूं. यहां पर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट राइट टाइम कहां पर है. FLD can be applied on all the time frames. Yes, it can be applied on all and across the time frames. So यहां पर अगर आप देखेंगे एक और चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, तो नेक्स्ट टाइम जो आ रहा है, जो सही टाइम मार्केट के लिए आ रहा है, फिर से आ रहा है वो 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2023. Now that happens to be my birthday as well, so it's a coincidence. So that's an auspicious day for markets on 6th of July, which is going to be a day of positive reversal. A day of positive reversal is what we expect there. इसका मतलब उसके पहले थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, उसके पहले थोड़ा फॉल होना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो मार्केट का मोमेंटम ऊपर का बना हुआ है. सो वी विल नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड, बट मोमेंटम माइट स्लो डाउन फ्रॉम हियर. ओके, आर यू विथ मी? सो वी कैन सी अ लिटिल स्लोअर मोमेंटम हियर rather than a very strong momentum from here on. Okay, I can see so many of you have heard this concept for the very first time, and I can see that many of you are talking about it, but it's an amazing way of looking at the market. तो एक काम करें दोस्तों, आज तो मैं फिलहाल मार्केट मंडे को क्या करना है, व्यू क्या है? व्यू ये है, अगर 18580 ब्रेक होता है और 12 बजे के आसपास होता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि टाइम पॉजिटिव है, उसके बाद में मोमेंटम फिर से ऊपर का शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर मंडे को 2 बजे तक मार्केट ने 18470 का लेवल ब्रेक कर दिया, 480, 18480, 18470 ब्रेक कर दिया, और 2 बजे तक कोई भी अटेम्प्ट ऊपर का नहीं आया, तब कुछ गड़बड़ है. तो तभी हमें देखना होगा यार ये गड़बड़ है. 18480 के नीचे, 18470 के नीचे मार्केट आ गया तो कुछ तो गड़बड़ है, सेलिंग प्रेशर बन सकता है. लूनार साइकिल है संडे को, शॉर्ट टर्म 15 मिनट्स का एक साइकिल है मंडे को 12 बजे, एक साइकिल आज बन चुका है. तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं यार मंडे का दिन मेरा मूड रहेगा सुबह मार्केट में आने के बाद बाइंग करने के लिए,
लेकिन प्राइस एक्शन देख के मैं अपना व्यू या मूड बदल दूंगा। तो इस तरीके से टाइम को देख के ट्रेड किया जा सकता है। आर यू विथ मी? सो एक काम करें, कल 11 बजे मिलेंगे आप मुझे। आर यू देयर विथ मी? ऑल ऑफ यू, आई एम शेयरिंग अक्रॉस अ लिंक where you can simply go and register yourself for tomorrow at 11 a.m. where I'm going to conduct 2 hours of this webinar, free exclusive invite for all of you, and I'm going to do that tomorrow at 11. लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस वेबिनार में हम जाते हैं हाउसफुल, सो यू हैव टू एंश्योर दैट आप रजिस्टर करें लिंक पे, द लिंक नॉट ऑन द जूम लिंक, द लिंक ऑफ द वेबसाइट। आई जस्ट शेयर माय वेबसाइट लिंक, प्लीज रजिस्टर ऑन दैट, क्योंकि वहां से आपको और भी लिंक डिटेल्स मिल जाएगी। लेट मी जस्ट डू दैट एंड लेट मी शेयर द लिंक यहां पर। तो यहां पर मैंने एक लिंक शेयर की है आप लोगों के साथ में, एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो ये लिंक पे आप, वेबिनार की लिंक है, यहां पर आप क्लिक करके you can register yourself. Are you getting the link there? On the chat box, I have put in a link of webinar, wavestrategy.com/webinar. You can go and register yourself for this webinar. But 10 मिनट पहले आना दोस्तों, क्योंकि अगर आप बाद में आएंगे तो हाउसफुल हो जाएगा और आप एंटर नहीं कर पाओगे। ओके, Jitendra Patel is saying only Indian who gives knowledge of Elliott wave without any charge, and really speaking, Elliott wave drives. Thanks, Jitendra, for that. And so go and register yourself for this webinar, which is going to be happening tomorrow, and it's going to be amazing learning for 2 hours. Be there at 10:50. 11 o'clock we will start. We go houseful, you will not be able to enter. And for people who wants to learn about time in totality, we have 24th and 25th of April, we have Master of Cycles program, which is happening on 24th, 25th, 24th and 25th of June. I'm so sorry, I'm still in that April mode. क्या करें? So 24th, 25th June को एक मास्टर ऑफ साइकिल्स का प्रोग्राम है, और मेंटरशिप भी हमारी स्टार्ट हो रही है वो दिन से। मेंटरशिप मतलब आप मास्टर ऑफ साइकिल्स के साथ में किक स्टार्ट करेंगे हम मेंटरशिप, अपकमिंग मेंटरशिप। सो you can be a part of that. You can know more details about Master of Cycles and mentorship program on the link. My colleague will just share it across and you will get that detail. Okay, Prabodh Kumar, Prabhat Seal, great to see you also here, has already registered. Thank you very much. You will be amazed what I'm going to do tomorrow, but be there 10 minutes prior. Any questions, please? I'm open for questions. So I'm just checking with my team. They are... Okay. Any questions, please? There is a question which is being asked to me on the chat given by... Just 1 second. Let me just check that. How do we learn about time cycle? Okay. This is given to me on Zoom. Someone posted on a Twitter. Okay. Learning about time is not difficult. It is comparatively easy than anything else. But trading time is little tricky. तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। सीखना बहुत आसान है टाइम के बारे में, ट्रेड करने के लिए कॉन्सेप्ट को ठीक से अप्लाई करना जरूरी है। एक्चुअली वो चीजें तो टेक्निकल एनालिसिस में सभी चीजों के लिए वैलिड है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट it is crucial for you to understand that you can learn about this concept in totality, where you know you can derive time for stocks, you can derive time for index, you can derive for fin nifty, you can derive for bank nifty, you can do it for your own self. तो ये सब टाइम आप डिराइव कर सकते हो। सो इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा मास्टर ऑफ साइकिल्स में, which is on 24th, 25th of June. It's a 2-hour program, which we 2 days of program, which we are going to conduct. So maybe that can kickstart your learning and trading about time. Does that answer your question? How to learn time completely? So I would suggest you can participate. You can learn from that concept in a much more detailed fashion, so that can help you learn about time in a very detailed way. Okay.
Any other questions that you might have? I'll just check the chat if I missed out. Prior candle hike. Okay, so कल हम जो बात करने वाले, we are going to discuss more about time and candlestick profiling. 3 rules of candlestick, ये सारी चीजें हम बात करेंगे कल के दिन में, which is going to be amazing. Poonam Bhav sir has registered for the upcoming mentorship program. Fantastic, Poonam. Great to get you for that program, and it's simply amazing. Can we apply cycles on MCX and all stocks? Of course. Time cycles can be applied on MCX and stocks as well. लेकिन सही कैसे identify करना है वो period, that is important. As per Gann, there is a bottom in 2024. I don't know. You might want to share that study across with me. Tweet करो. मेरा Twitter handle @kyal_ashish है. You can tweet it across, so I can go through your study. I believe in Gann. So Jay is saying 12 noon on Monday. Most likely move on 12 noon on Monday. मैंने बताया ना आपको, ऑलरेडी बता दिया, आप पहले का देखेंगे तो समझेगा. And horizontal lines are Gann levels, yes. So ignore the horizontal lines for now. मैं Gann के बारे में फिलहाल नहीं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में. You can ignore it for now. Okay, my colleague is sharing across link with me. Why are you sharing with me? I don't know. You need to share it with the people here or who needs that link. So मेरा Twitter link, you can share it across. Don't share it with me. It doesn't help. I know where do I have to tweet. So I know that. Okay. FLD नहीं समझ में आया. FLD के बारे में अभी नहीं मैं बात कर पाऊंगा. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल से. I will not be able to take. There are so many post questions coming up. I'm getting little distracted. ज्यादा डिटेल में कल बात करेंगे हम. एक तो वो है, और साथ ही में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि you can be a part of this wonderful program on mentorship on timing the market or master of cycles. Again, my colleague will share across the links with you all. And also tomorrow I'm going to see you tomorrow at 11 a.m., which is 3rd of June, Saturday morning at 11. We'll discuss it in much detail. I'll draw the blueprint of the market for the coming week with time. कौन से टाइम पे मार्केट क्या करने वाला है, बैंक निफ्टी stocks, everything. I'm going to do that with time tomorrow. So do ensure you are there on time with me at 11 a.m. Thank you very much. Ashish Kyal signing off. Before leaving, do ensure you subscribe to that YouTube channel. Like if you like the video, comment there. तो मुझे पता चले यार ये Friday at 4 is helping everyone to become a better trader. So my only wish is that everyone should become a wonderful trader, and it works. It works. That is for sure. Thank you. Have a wonderful time. See you soon.